Hello students, this is History of English Language. So listen, the history of English language from a linguistic perspective traces its origins to the West Germanic dialects brought to Britain by Angles, Saxons and Jutes in the 5th century. Very important. How that is, it is said that Anglo, Saxon and Jutes, they came, they attacked, they were West Germanic tribes, actually West Germanic tribes, these all three, and they came to Britain, they attacked in Britain, and then they brought English language with them. Okay, in 5th century. 5th century means 450 century, evolving through old, middle, early modern and modern English stages, and this way language was evolved. How, we will see in detail. Origins and early stages. First is Proto-Indo-European roots. The English language, like many other European languages, has roots in Proto-Indo-European languages. Like English language is similar to other European languages, right? Other European language, the root, if we find root of the other European languages, so that is Proto-Indo-European, right, language. And similarly here also the root is same, what the English language and other European languages का root same था in the Proto-Indo-European languages. वही एक root था, it was common, spoken by nomadic peoples in southern eastern Europe, right? So nomadic people, they used to speak that language, right? And around 5,000 years back, 5,000 years back, this English language was spoken, but in a very different way. पर रूट अगर हम सारे बहुत सारे लैंग्वेजेस की देखें तो कहाँ ख़त्म होती है जाकर, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, राइट? सो दैट इज़ द रूट. नाउ Germanic influence. So these are the Germanic tribes who Anglo-Saxon and Jutes. These were the three Germanic tribes migrated to Britain in the 5th century. Their dialects forming the basis of what would become Old English. So they came and they attacked in Britain. So that part was England. It is not given here. I'm not getting that text from where did I had taken out. If I get, definitely I would like to speak on it. But then here I am sharing with you that when Anglo-Saxon and Jutes, they were the Germanic tribes, and then they moved to Britain, and the place was England. So then definitely they brought the language with them, and that language overpowered their native language. वो उनको उनके लैंग्वेज से भारी पड़ गई, और वहाँ पे लोग धीरे धीरे इनकी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और फिर इंग्लिश बनी जिसका नाम था इंग्लिस्क. हाँ, what I remember, I will definitely will tell you later, but that's a इंग्लिश और अभी बता दूंगी, ऐसा कुछ उसका नाम था. तो इट वॉज बिगनिंग, राइट? तो वहाँ से ओल्ड इंग्लिश बन गई. व्हाट हैपेंड एक्चुअली, it is said that there is a criteria that the word I think 10,000 times, if it is used in different places, that it may be the part of dictionary. So similarly here language exchange, right? They came
and they started living, and then gradually people learn new words from them. From whom? Anglo-Saxon and Jutes. And then they learn some local words, language from Britain, right? England. वहाँ के लोगों से इनने सीखा, इनके लोगों से उन्होंने सीखा. After some time, it becomes a language. So that language was called Old English. So this early form of English, also known as Old English, is also known as Anglo-Saxon, right? Was characterized by complex grammar and vocabulary heavily influenced by जर्मैनिक लैंग्वेजेस. जर्मैनिक ट्राइब्स थे तो इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया लोकल लैंग्वेज पे, वो हावी हो गई. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कोट द सेम एग्जाम्पल लाइक इन इंडिया अमेरिकन्स और ब्रिटिश केम, राइट, और बिकॉज दे केम so they overpower our language. We were Hindi speaker. However, since long time we had been facing that's a attack from different places. People like different people, Mughals and this and that, they came. But then for British, they ruled for 200 years, and that's why their language overpowered our language. It was subsided. हमारी हिंदी कहीं दबने लगी और लोग धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन दे लर्न इंग्लिश. So similarly here also what happened, their language which was brought by Anglo-Saxon and Jutes, they were Germanic tribes, and then their language overpowered native language, and this way that was known as Old English. But it was very tough. Grammar was tough, vocabulary was very heavy. Let me give you one example. When this college established, and since 10 years I have been working here, and then I got to know that there was not a proper system and very tough. Some rules were very tough, which were not possible, but then we had to do. So that gradually they understood. So that change and refine, and then rectification, and one day now it's so almost very smooth. So that was the time Old English. That's a very complicated grammar, and vocabulary was tough. Naturally, it was spoken for a long time, but then what changes, how language changes, we'll see in Middle English. But before proceeding, here they are talking about dialects. You know that what is dialects? That's a community language which is made for particular community. है ना? Suppose here if we say Malviya language, right, तो मलयालम, तो जो अपनी छोटी छोटी सी कम्युनिटी के लिए लैंग्वेज बन जाती है आपस में अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ कॉल्ड डायलेक्ट, राइट. तो डायलेक्ट मतलब लोकल, व्हाट वी कैन से दैट स्लैंग्स दे यूज़, राइट. स्लैंग्स इज़ द मेन फीचर ऑफ डायलेक्ट. कुछ भी अपनी समझ एक कम्युनिटी को समझ में आ जाना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड डायलेक्ट. तो एक डायलेक्ट तो नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटी मीन्स मेनी डायलेक्ट्स वर देयर. सो ओल्ड इंग्लिश हैड सेवरल डायलेक्ट्स including Anglican, right, then Mercian, then Northumbrian and Saxon, Kentish and West Saxon. So why? Because it was very big incident, right, and then many people came, not only 3 people along with them, definitely many have came with them. So then when they came, so that there were number of groups, and that communities were developed. Like there must be understanding between among them, then the different groups, and then they start speaking something different. So that different language is called dialect, right. So these are the name of dialect. Anglican, in which Mercian and Northumbrian, that language comes. Then Saxon, so Saxon they have their own group, so that is Kentish and West Saxon, right. So these are the
dialects which were famous at that time. Now, language contact. The Vikings invasions and colonization of parts of Britain in the 8th and 9th centuries led to significant lexical borrowing and grammatical simplification in Old English, influenced by North Germanic languages like Old Norse. What they are saying? वाइकिंग्स ने इन्वेजन किया, अटैक किया एंड कोलोनाइजेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन इन 8th and 9th century. Means they came by 5th century. So 300 years around they ruled. Now in 8th century and 9th century, Vikings invaded the same place and led to significant lexical borrowing and grammatical simplification in Old English. So when 300 years Old English was spoken, then Vikings attacked, and then definitely new generation after 300 years, they were new generation in which local people were there, Anglo-Saxon, Jute. अब वो local कहलाने लगे क्योंकि वो वही रहते थे, 3 years से उनकी generation रह रही थी. So then Vikings attacked to them, and when they attacked, so they brought significant change. Why? Because change was that lexical borrowing. So what they say that led to significant lexical borrowing and grammatical simplification of ओल्ड इंग्लिश. तो सबसे पहले उन्होंने जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश थी उस समय, एग्जिस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेंज इट एंड देन दे मेड इट सिंपल. तो उसको सिंपलर कर दिया एक तरह से उन्होंने, है ना. इन्फ्लुएंस बाय नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेजेस लाइक ओल्ड नॉर्स. तो ओल्ड नॉर्स एक लैंग्वेज थी, और इन्होंने वाइकिंग्स मतलब डेफिनेटली 1000-2000 कितनों का ग्रुप आया होगा वहाँ पे, उन्होंने सब ने मिलकर ओल्ड इंग्लिश को इजी किया, कई साल तक राज किया वहाँ पे, और कुछ बोरोइंग वर्ड्स भी लेके आए. बोरोइंग मतलब जो बोरो करते हैं कुछ दिन तक की, इसको इजी करने के लिए ये बोला जाएगा ऐसा. तो बोरोइंग वर्ड्स थे, और वो सबसे ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश किससे इन्फ्लुएंस हुई? दैट इज़ जर्मनिक, इन्फ्लुएंस बाय नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेजेस. भाई एक मैप को अगर आप देखोगे, कहीं अटैक होता है तो उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आता है. इंडिया का मैप देखो तो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना. सिमिलरली वन प्लेस में, वन डायरेक्शन में जर्मनिक ट्राइब्स आए, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स, एंड दे अटैक्ड, तो उसका असर पूरे चारों तरफ ही हुआ होगा. फिर उसके बाद व्हेन वाइकिंग्स अटैक टू देम आफ्टर 300 years, तो दैन दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेजेस. तो वो नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेज जिसमें ओल्ड नॉर्स थी उससे बहुत इम्प्रेस थे. तो उन्होंने क्या किया, उनको देखकर जो लोकल यहाँ पर ग्रामर था उसको सिंप्लीफाई किया, एंड सम बोरोइंग वर्ड्स दे एडेड इन द लैंग्वेज. अब क्या हुआ कि 1150 to 500 years मीन्स दैट इज 12, 13, 14, है ना. सॉरी 12 ना, 13, 14, 15, 350 years. ये वाला पीरियड जो था वो कितना था? 350 years, है ना. तो 350 years में यहाँ पे क्या हुआ, कैसे चेंज आया ओल्ड इंग्लिश से न्यू इंग्लिश? नॉर्मन कंक्वेस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा. द नॉर्मन इन्वेजन ऑफ 10,066 ब्रॉट फ्रेंच टू रूलिंग क्लास. इम्पॉर्टेंट, French to ruling class, leading to a period of bilingualism and significant French influence on the English language. अब वो तो राज करने लगे, वाइकिंग्स आए, वो राज करने लगे, एक लैंग्वेज बन गई. लेकिन होता ही है ना, दिस इज़ द ह्यूमन लाइफ, that after long time they did, right, from 500 century to, देखो यहाँ से देखो, from 450, sorry, from 450 to 1150 means ये हो गया 500 ना,
तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना, मतलब 600 ईयर्स करीब के बाद, बहुत बाद, 700 ईयर्स के बाद कौन आया, अटैक किया किसने? इसी बीच में यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आ गए, वाइकिंग्स आए यहाँ पर 450 से वाइकिंग्स आ गए इसके बीच में, वाइकिंग्स ने अटैक किया, ये वाइकिंग्स ने अटैक किया, फिर ये यहाँ तक ये चलती रही लैंग्वेज जिसको हमने ओल्ड इंग्लिश कहा। उसके बाद फिर किसका अटैक हुआ? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने जब अटैक किया तो वो उन्होंने इतने साल तक राज किया यहाँ पे, है ना, 16 से 17, 18, 12 से 13, 14, 15, 350 ईयर्स। तो वो जब आए तो नेचुरली फिर चेंज आना था लैंग्वेज में। तो व्हेन नॉर्मन इन्वेशन ऑफ 10,066 10,066 ब्रॉट फ्रेंच, बहुत ज़्यादा बड़ा ये अपने साथ फ्रेंच लेके आए, फ्रेंच टू रूलिंग क्लास, है ना। तो वो उस समय जो शासक होंगे, जो रूलर्स थे, उनके लिए फ्रेंच लेके आए, लीडिंग टू अ पीरियड ऑफ बायलिंगुअलिज्म। तो बायलिंगुअलिज्म मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म, आप यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, सो वी आर बायलिंगुअल, राइट। सिमिलरली दे कैन स्पीक local language, but then French also was one of the options, right? And significant French influence on the English language. But then French is French, that was different language, but French influenced a lot, and that is English language. After this this video I am going to share with you one graph, that is contribution of different languages, very important. Many a time in the class I repeated to make it anywhere, so here which is very important. So when you write this question, so that diagram you should make, right? Because French and 26% contribution in English development, 26% we speak French language. French is very similar to English, right? So French का बहुत ज़्यादा influence है English language में. So that will be shown, should be shown through that diagram which I am going to share after this video. Anyway, so that was known as French, कह सकते हैं French का most influence. So that for Middle English, two things are very important. Norman conquest, right? They conquest, invasion, and French, they brought French language. So that's why that Old English was changed into Middle English, right? They had two options. They can speak their dialects, they can speak their local language, but for ruling class French language was suggested. So this way one more option they had. Now what was the how Middle English was developed? So development of Middle English emerged as a result of interaction between Old English and French. Very important. Middle English emerged as a result of interaction between Old English was existing. So Old English and New English, new language came, French. So that was the between two, we can say that Middle English. How it was known as Middle English? Because it was the combination or interaction between Old English, local people they used to speak Old English, and French was new to them, with the development of simpler grammatical structure, because grammatical structure was still tough. So then they made it more simple, and vocabulary enriched by French, and vocabulary was replaced, new vocabulary came. For example, you young generation, right, you speak WANA, SMS language, many words you speak new, Google, please, you can do Google, right? So this way Google is used as a verb, right? Please WhatsApp me means verbal form. So these are the new words, right? Similarly, when they came, they brought French. So French was new attraction to them. So that's why instead of some Old English, they started speaking with mixed language, French, more and more words they use. And that's why the form of Old English was changed and it became Middle English. Now moving to next, that is early modern English.
Then again, definitely one reason, not one reason, reasons must be there. That's why that Middle English, which 350 years, too much time, right? They used to speak Middle English. Then what's the reason that Middle English became early modern English? So that is the Great Vowel Shift. Very important reason. A significant phonetic change known as Great Vowel Shift occurred during this period, altering the pronunciation of English vowel. I gave that example, same example I quote here, that is पहले के मूवीज़ आप अगर देखो तो हीरो हीरोइन बहुत राग लगा लगा के बोलते थे. आई एम गिविंग यू हिंदी फिल्म एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल दे यूज टू स्पीक कि हाँ पिताजी आपको कोई बुला रहा है. दिस वे दे स्पीक. बट नाउ मॉडर्न मूवीज़ अगर आप देखो तो बहुत अलग ही तरह से, दैट इज अ टोटली ड्रास्टिक चेंज व्हेन मॉडर्न जनरेशन स्पीक, राइट. तो दे स्पीक स्ट्रेट, right, and that's why the great vowel shift, that was not longer time they don't use much vowel. For example, caught, right, for example, give. Many student, I many a time I tell, it's not give, it's give, right. So longer vowels like a, e, I, o, u, right. They say yes, I will give you, not this way, yes, I'll give you, right. So that is shift. That vowel shift was the breakthrough when that language English was changed. So significant phonetic change. Phonetic means sound, not writing. Sound changes. And that was great vowel shift occurred during this period, altering pronunciation of English vowels. And then English vowels change ho gaye. Longer vowels generally did not use, right. That was short vowel. Then second reason, Renaissance. Renaissance influence. Renaissance led to increase borrowing of Latin and Greek words. Renaissance, you know that Renaissance means revolution, manufacturing, right, industrialization, and these are from all over the world. It was going on, and that is why that revolution came. Then exchange of words, letters, it was started. So that is Renaissance led to increase borrowing of Latin and Greek words. So ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोरो किया जाने लगा. एंड रूट्स इनटू द इंग्लिश वोकैबलरी, एंड इंग्लिश वोकैबलरी बिकॉज ऑफ इट दैट वाज चेंज. सो दैट वाज द Renaissance led to increase borrowing of Latin and Greek words and roots into the English vocabulary. Actually what happened, that when technology came, definitely we have to use technical words. Many words we don't use, even in Hindi we use the same. Computer might be there as Hindi word, but then engineering, computer, and many. So from every person they use the same terminology. So here also when Renaissance, in the time of Renaissance change, तो exchange movement, लोगों से ज़्यादा लोग मिल रहे थे, ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया था, बिजनेसेस बढ़ रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दिस, दैट्स अ बोरोइंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. इट वाज द another reason. Now very big breakthrough, that was printing press. Printing press, the introduction of the printing press in London played a crucial role in standardizing the language. Press अपने आप में ही बहुत बड़ा स्टैंडर्ड था, and making it more accessible. Reading, that's a mass production because of printing press. Type once upon a time मैनुअल राइटिंग, वो भी आपको पता है पत्ते में और किस किस में लिखी जाती थी. स्याही कुछ और से बनती थी,
पेड़ों की कुछ कलर से, है ना, पत्तियों के कलर से, इससे उसे। फिर दैन बड़े बड़े कौन से पत्ते होते थे उसमें लिखा जाता था, ताड़ के पत्ते इसमें उसमें। फिर दैट वाज रिप्लेस्ड बाय हायरोग्राफिक्स। हायरोग्राफिक्स मीन्स एनिमल्स के थ्रू, पत्थर से लिखते थे, पत्थर के ऊपर। दिस वे दे स्टार्टेड। दैन इट वाज चेंज बिकॉज लैंग्वेज सिस्टम वाज ग्रेजुअली इट वाज बीइंग मेड। तो अलग अलग कंट्री, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ इंडिया में, बाकी कंट्रीज़ में भी लैंग्वेज बन रही थी। तो धीरे धीरे वो एक कोई नया फॉर्म आया जिसको लैंग्वेज कहने लगे। कुछ रिटन फॉर्म भी आया, कुछ बोलने का भी स्टैंडर्ड। फिर वो ओल्ड लैंग्वेज बन गई, ओल्ड से मिडल बन गई, मिडल से मॉडर्न बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्रिंटिंग, तो लोगों के रीच वॉज वेरी लिमिटेड कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर 100 में से शायद 4 लोग, 2 लोग, 10 लोग बोलते थे। फिर धीरे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों को बाइबल लोगों के हाथ तक आई। उनको पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन स्प्रेड हुई। तो जहाँ पर 10 थे वहाँ 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए। और इस तरह से लोगों को जब बाइबल आ गई तो पढ़ना भी शुरू हुआ। और एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड प्रिंटिंग प्रेस के कारण, मास प्रोडक्शन के कारण बुक सस्ती हो गई और लोगों तक पहुंचने लगी। और एक बहुत बड़ा चेंज आया लैंग्वेज में। एंड दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस विच वाज इन्वेंटेड इन लंदन, है ना। तो ये दिस इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन इन ओल्ड मॉडर्न इंग्लिश। फिर मॉडर्न इंग्लिश जो अभी चल रही है, ओल्ड मॉडर्न इंग्लिश का क्या पीरियड रहा, तो समझो ये 1500 से 1600, 150 साल, है ना, 1650, ये याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब मॉडर्न इंग्लिश आ गई। तो मॉडर्न इंग्लिश मतलब आज तक ग्लोबल स्प्रेड। क्या हुआ, द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश तो अपना कॉलोनाइजेशन कर ही रहे थे इधर उधर, तो उनका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा था इन्वेजन। तो ब्रिटिश एम्पायर जहाँ जहाँ बढ़ रहे थे। एंड लेटर द यूनाइटेड स्टेट्स प्लेड अ मेजर रोल इन ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। तो नेचुरली जहाँ बिजनेस ज़्यादा था वहाँ उनका लैंग्वेज का प्रभाव भी पड़ने लगा। और इस तरह से धीरे धीरे जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, जहाँ जहाँ इन्होंने अदर कंट्रीज़ में, अदर डायरेक्शंस में अटैक किया, तो वहाँ वहाँ ये अपनी कॉलोनीज़ बनाते गए और इंग्लिश स्प्रेड होती गई, है ना। तो सेम दे आर टेलिंग, ग्लोबल स्प्रेड, द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड लेटर द यूनाइटेड स्टेट्स प्लेड। सो एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये आप जरूर लिखना कि द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड लेटर द यूनाइटेड स्टेट्स। और वो स्टेट्स जो पूरे यूनाइट हो गए, है ना, यूएस उसी को कहते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स प्लेड अ मेजर रोल। क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टेट्स मिले एक साथ तो उनके लैंग्वेज में एक्सचेंज हुआ, एक स्टैंडर्डाइजेशन आया, और दैट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड दैट इज़ नोन एज मॉडर्न इंग्लिश। और इंग्लिश का प्रचार प्रसार भी खूब हुआ और मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोग इंग्लिश बोलने लगे। अब कंटिन्यूड एवोल्यूशन आज भी है, लैंग्वेज स्टैटिक तो होती नहीं है, आज भी लैंग्वेज बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन लैंग्वेज रोज चेंज होती है। तो इंग्लिश कंटिन्यूज टू इवॉल्व with new words and expressions emerging as a result of ongoing cultural and linguistic influence। और लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस भाई, एक दूसरे से इतनी रेसिपी, इतने प्रोग्राम्स, इतना टेक्नोलॉजी रोज़ आप अपने फ़ोन में देख रहे हो, डेफिनेटली विल लर्न अ लॉट। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन गिव, कहते हैं वो क्या ही कर लेंगे, ये हिंदी का एग्जाम्पल है। ये ही वाला जो नया स्टेज आया है, ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, फिर ये थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ नया आएगा। तो दिस वे इंग्लिश, इवन लॉट्स ऑफ चेंज इन इंग्लिश स्टिल। You just give this example, please give this example. Earlier we used thou, right, we use thee, now we use you is replaced by thou, है ना, your thou is replaced by you, then thee is replaced by your, है ना, then that's a doth is replaced by does, right. So these are the changes which is very important, right. So you just mentioned is that's a evolution, that process, continuous incessant process, it will do whenever human beings will be there. Language can never be static, it is matter of flux, it keeps on changing, रोज चेंज होती है। तो होता अभी today only I have read one word, लेट मी टेल यू, अभी आपको शेयर भी किया, मैं दिखा देती हूँ इसमें।
So I just shared that word, that is, wait a minute, I shared here, no? Yeah, that is, you can give the same example here, that is Ghiblify. Here Ghiblify is, that's a recreation of something. So we are going to discuss later on what is Ghiblify. But yes, that is pronunciation of Ghibli, है ना? So Ghiblify, this is the spelling. If you remember, you can write. But sound is Ghibli, it's not Ghiblify. So this way you can quote the same example, that the number of reasons are there, right? So that is there. So that continuously I gave example, even that's a Ghiblify. And then one more example I shared, that is uh, what the chillax. Chillax. Chillax is chill plus relax, right? So every day Shakespeare has had invented 15,000 words, right? Every author gives something new, so that's a continuous process. And now varieties of English, and that is called, that variety of English is called Englishes. ये भी आप लिख सकते हो, Englishes, which is called Englishes. Even Englishes and Englishes, you know, Hindi and English is Englishes. Englishes, है ना? Englishes, Hindi plus English, right? So these are the varieties of English. That's a different varieties of English have emerged, including British English, American English, and other, each with its own unique characteristics. Naturally, American language is also important and its own characteristics, and British English is too much with grammar. But now even grammar is gradually being changed, right? So that's a shortcut, email language, SMS language, right? These all are the part of modern English language. So I think you must have got the idea. And then the pie chart I'm going to share with it. So please make it when you deal with this question. I think you must have got little idea. If you don't, if you have any doubt, please ask me. Okay. Thank you. All the best.